must not keep waiting and start the talk show. So I would like the coordination team to come up and pass on the mics. Sir, my question is, what is the procedure of checking name in voter list online and offline mode? And may I request you to please elaborate on it? Checking the name from the whether the name is there in the voter list or not. Uh, the best thing is to make use of technology. Voter helpline app is the easiest method. Through the voter helpline app, you can search your name. You can search your name by giving the voter ID number, if you have the voter ID number. If you do not have the voter ID number handy with you, you can still search the name by giving like the name, father's name, and address, etc. So various fields you can enter, and then the database will be searched, and all those records that match with that combination, they will be shown, and then you can figure out whether your name is there or not. So this is one method. The easiest thing is to do along with the voter ID number. Then you will be able to know. Similarly, on nbsp.in, and there is another specific portal called electoralsearch.in. Electoralsearch.in. You can find your name. You can go to the CO Delhi's website, and you can check your name from the CO Delhi website as well. These are the online methods of checking your name. You can also check the name by sending an SMS. You can send an SMS to 1950 and write ECI space and your voter ID number. ECI space voter ID number, and send it to 1950. So you will be then able to get a return message giving the details of your particular record in the voter list. And if your name is not there, then you will be getting a message accordingly. You can also send a message to another number, but I think it's better that you remember just 1950, and the syntax is ECI space and voter ID number. How to do it offline is again very easy. You can call 1950, and then ask them, take their help in checking whether your name is there or not. Or you can call the BLO, the booth level officer. He will also be able to assist you. If it is during the summary revision, then on the first day we publish the draft electoral roll, and we paste it at every polling station. So wherever you go and vote, at that polling station you can go and check that the entire voter list of that polling station will be displayed there, so you can check your name from that. Similarly, on the after the summary revision is over, then the final roll is published, and that is also pasted there, so you can check even after the final electoral roll whether your name has come. If you during the special summary revision you get your name enrolled. So these are the various ways in which you can check the name. Thank you, sir. But easy thing is to do it on mobile app, right? Yeah. I hope I have satisfied you. Greetings, dignitaries. I am Pavan from BBA, and I would like to ask: is using of EVM right or wrong? While many countries have already banned it, and many experts like Dr. Hari Prasad is expressing concerns like it can be tampered with and manipulated. This is a good question. See, it is very important that the voter should have complete faith and conviction in the methodology of voting. Otherwise, there will be less participation. So I want to tell you that the EVM or the election voting machines, electronic voting machines that we are using, those machines are absolutely tamper-proof. These machines cannot be tampered with at all. Why I am saying so? Because the design of the machine is such that it cannot be integrated, it cannot be linked to anything, either online or offline. The data cannot be retrieved from that machine, or the machine cannot be controlled
by any outside uh, machine or device. It does not have any Wi-Fi connectivity. It does not have any internet connectivity through cable. It does not have any Bluetooth connectivity or any other such connectivity which can be used to fetch the data, to hijack the data or to tamper with the data of that machine. It is a standalone machine, and it has a chip in it which is its brain. That chip is such that it can be only installed once, and if anybody tries to enter into that chip, then it cannot be reused after that. So it gets completely damaged if anybody tries to enter that chip. So because of these design features, the EVM which is used by the Election Commission of India is completely tamper proof and is completely beyond any doubt or any suspicion, and so there is absolutely no reason to be skeptical about it. And let me tell you that the election results have again, time and again, shown that the results coincide with the voting pattern. Sometimes some political party wins an election, sometimes some other political party wins an election, opposition party wins an election. So there should not be any doubt about the integrity of the and the sanctity of the electronic voting machines used by the Election Commission. Okay? Next question, please raise your hands. My name is Rishabh Goel. I'm pursuing BBA. My question is, are you thinking young people need to connect with politics early on? First thing that I want to mention and clarify is that political participation is a different concept and electoral participation is a different concept. Election Commission of India is a apolitical body. It is an autonomous body under the Constitution. Its function is to register political parties, to prepare the voter list, and to conduct the elections. It is the entire purpose of the sweep program, and we have used this word sweep, and it was started in 2009. That means how to educate the voters, etc. The purpose of sweep is to encourage voter participation, that means electoral participation, and not as such the political participation is a very different concept. So how the youth can participate in politics, that is a different question altogether. How? Okay, I can tell you that Election Commission of India registers political parties. So you have political parties, they are recognized and unrecognized parties. There are national parties and state level parties. So the youth is always free. You are always free to either join a party and work for that party, or you can also enter student politics in your institution. So joining politics is available to everyone. There are no fetters on it. Nobody has stopped anybody from joining a party or voting for anyone. So there should not be any problem. If there is a problem right now, it is that you are not going and voting. See, the first step that you can take is to become a voter and go out and vote, right? Yes, sir. And elect good politicians. That is the first duty. Those who also aspire to contest elections in future, they are free to do so, and for any political party. And I wish you all the best.
All right. So we'll move to next question. Good morning, honorable guest. My name is Manya Grover from BJMC first year. My question for you is, sir, as you have told the helpline number for election commission, so sir, do they keep any record of calls? And is the election office works for the grievances notice? See, 1950 functions from 9 in the morning to 9 in the evening. So 9 to 9. And during that period, whatever calls are received, they are not only duly answered, but they are also duly logged, duly registered. And we also monitor every day. Actually, Mr. Jail Gupta gives me a report every day that how many calls were received, how many were attended, what was the average time consumed by each call, and what kind of issues were raised during those calls, etc. So that is one. The second important thing is that if anybody by calling raises any complaint, then that complaint also is logged into the grievance portal by the call center. And then on that grievance, action is taken by the districts. And after the matter is resolved, it is informed to the caller. Okay. So thank this you. is this call helpline facility is a very comprehensive outreach, comprehensive facility available to all the citizens. They can call this number and get their grievances addressed. They can also seek any information. They can also give any suggestions. So it is available for all purposes. Okay, Thank you. sir. Should we move to the next question, please? Hello everyone, my name is Pooja Bansal. I am pursuing BGMC course first year student. So my question is, what do you think about postal voting and its transparency? This is a very good question. Actually, postal voting is a subject on which there is generally less clarity and less awareness. See, postal ballot is available to certain categories of voters. It is not available to everyone. As far as India is concerned, it's not available for everyone. Only certain categories of voters. You may sit down, please. Only some categories of voters can exercise their right to vote through postal ballot. For example, service voters. Now, there are 4 types of service voters in our country. Those who are in the defense forces, those who are in the paramilitary forces, those who are in the armed forces of a state, and those who are working in other countries on behalf of Government of India, like those who are working in embassies and consulates, etc. So these are the 4 categories of people who can vote through ballot, through postal. And for that, an electronic system has been developed by the Election Commission of India, by which the postal, the ballot paper is made available to these voters electronically so that it reaches fast. But after they actually vote at home and then fold it and then put it in the envelope, etc., and seal it, after that it is to be sent by post. That is why it is called postal ballot. So this is one category of the people who can vote by postal ballot. The other category is the absentee voters. Absentee voters. And then who are these absentee voters? Absentee voters are people for whom it is difficult to become present at the polling station because of some reason. For example, people with disability. If the disability is such that a person cannot conveniently come and vote at the polling station, then such a person can vote by postal ballot. They have to opt for it. After the announcement of the election, they have to submit a certain form called 12D as an application that I want to vote by postal ballot. Then similarly, those who are very old people, more than 80 years of age. Similarly, people who are COVID positive. So because they are COVID positives, they cannot come to the polling station and vote. So such people also
are given this facility, or those who are working in essential service, like somebody is a pilot, so he has to fly the aircraft even on that day. He may be actually in New York because of his duty, so he cannot come to the polling station. So such people also are allowed to vote by postal ballot. And in the category of these absentee voters, it is our team, our polling team, that goes to their homes. They will go to their home with the postal ballot, and they will set up the polling station at home for that person, so that the secrecy of voting is maintained even at home, and the whole thing is videographed, and the agents of the candidates are also allowed to witness it. So this is the system of postal ballot. I hope it's clear. Let us move to the next question. Hello everyone, my name is Anamika Sharma and I'm a BJMC first year student. My question is for you, Honorable Menka ma'am. Ma'am, according to you, what type of steps should be taken to maximize the voters' participation in election, referring Delhi recent legislative assembly election? As we have been referring, there is the reason why people don't come back on the day of poll to vote is one, because probably there is lack of awareness, which we are trying to address in the form of these kind of sweep programs, and two, because their awareness on their participation is also not there. That is, there could be a mistake in the name, there could be a mistake in the part where they have to vote. So because there are difficulties in the electoral roll itself, people think that why should I go to a polling station, stand in a queue, then find out that my name is not there in the electoral roll. That could be one reason why people desist from coming to vote, which is again addressable. And that is why we are saying that please check your details on the voter helpline app. And if there are any corrections to be done much before the day of poll, this can be easily addressed. So if a person confirms that his name or her name is there on the electoral roll, he knows which is the polling station that he has to go and vote. And secondly, he also understands his responsibility to go and vote. I think we will be able to solve this issue. Namaste, Jai Hind sir. Again, a very warm welcome to you. So my question to you is right to vote. In India, every citizen has the right to vote. And when it comes to Divyang, divine bodies, how do you manage to help them on the day of the election? So you are talking about the persons with disabilities. Yes. Sir also briefly mentioned about this. Honorable Election Commission has made quite many steps to ensure that voting becomes a participative process, an inclusive process, so that persons of every kind can participate in the electoral process. The first thing is about the physical challenges, those people who have locomotive disabilities. It has been mandated that every polling station will have a ramp, which means that if somebody is wheelchair bound, there should be no difficulty in the person accessing the polling station. So that is the first step. Earlier, in the earlier years, there used to be polling stations which are on the first floor with stairs where people had to be carried. We have also seen scenes like that where an voter has been physically carried out of a wheelchair, taken to the polling station. But now it has been mandated. So you will find that 100% of the polling stations have a ramp which helps in accessible election. Number two, for people who have visual impairment, there is a braille enabled system where without the help of anybody, the visually impaired person can come, and the EVM also has the braille inscribed script, so they can find out which candidate's name is appearing at which slot, and they can vote accordingly. Thirdly, for people having hearing impairment, the sign language is depicted in the form of pictures and posted in front of every polling station on the day of poll. So that also helps. In addition to all this, there is also a concept of having an assistance for voting for people who have physical disability. To facilitate all these things, before the elections, we have something called as marking of the PWD voters in the electoral roll. So every DEO will know
how many persons with disabilities are there in their district who will have to come for voting, who need to be assisted. So once we know that, special arrangements are made to ensure that they come hassle-free, cast their vote and go back. So these are all the steps that is taken for Divyang voters. Now we will move towards the Shapat Grahan for giving vote. तो हम अब वोटर प्लेज लेंगे. हम हम भारत के नागरिक भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जरूर. जय हिंद. थैंक यू. Let's call upon a stage the Vidhan. Sir, it is the Nukkad Natak team of our institute. So here they are. All the best. Thank you.
आखिर ऐसा क्यों? पापा पापा मेरा बैट टूट गया, मुझे नया बैट दिलवा दो। ये ले बेटा 200 रुपए रख। थैंक यू और पापा। साथ में बॉल भी ले लियो। पापा पापा मुझे भी 200 रुपए दो ना, मुझे भी बुक्स लेनी है। क्या करेगी पढ़ाई लिखा करके? आगे जाके तो तेरे को घर ही संभालना है। मैंने सुना है 12वीं का रिजल्ट आया है। हाँ आंटी आज ही आया है। कितने परसेंट आए फिर? पूरे 55% आया, 55%। क्या बात है बेटा। अरे आंटी मैं तो पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, फर्स्ट। क्या फायदा फर्स्ट आने का, इसके बाद तो तुझे चूल्हा चौका ही संभालना है। अरे दाई माँ देख तो जरा, चोर है कि चोरी? अरे श्याम लाल पूरे 1100 लेऊंगी छोरा से। रे ताई चोर है ना? देख भाया जो बने दे दे। के बात होगी ताई? फिर छोरी से। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए। वैसे तो भारत देश में बेटियों को माता का रूप माना जाता है। कोई उन्हें सरस्वती, कोई दुर्गा तो कोई लक्ष्मी माँ बोलता है। पर ये सब देखने के बाद मैं नहीं मानती। बेटी होगी तो घर बार देखेगी, चूल्हा चौका संभालेगी। क्यों? उसके अपने खुद के कोई सपने नहीं, खुद के कोई अरमान नहीं। तो आज रिदम थिएटर सोसाइटी प्रस्तुत करने जा रही है अपना स्वलिखित स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, जिसका नाम है तारिणी। अरे तो लड़कियां पढ़ लिख के क्या ही करेगी? कहाँ जाके रसोई संभाल, ससुराल में जाके हमारी नाक मत कटवा दियो। दहेज के लिए पैसे जोड़ने से अच्छा उसे पैदा होते ही मार दिया होता। ऐसे ही ताने और ऐसी ही बातें हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। अपनी ही बेटी को हम भार समझते हैं। प्यार प्यार ध्यार से अच्छा हम उनको कहते हैं कि दहेज के लिए कर लिया होता। क्यों? अरे उनका बोझ ही था तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? रे भाया इतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की रो रिश्तों का इन्हें ठुकरा दियो। अरे दीदी कई बताओ थले, बात छोरी इतनी पढ़ी लिखी है, सारा दिन मारो दिमाग खाती रहती। बाबूजी हमको नए शहर में नौकरी करने का अवसर मिला है। अरे ना बिटिया मना कर दे, वरना दूसरा शहर में ऊंच नीच हो गया तो कौन ब्याह करेगा तुमसे? रे देखो मारे घर लक्ष्मी हुई से। अरे काय की लक्ष्मी? यहाँ पे तो लक्ष्मी लगानी पड़ेगी। वैसे तो बेटियों को घर की शान माना जाता है, फिर क्यों इस झूठी शान के खातिर उनसे जीने की मर्जी से जीने का हक, अरे और पढ़ाई का अधिकार छीन लिया जाता है। अरे भाई प्रीत, मेरा लड़का कैसा है? शेर की चिंता है आपको तो शेर की माँ का क्या? अरे भाई शेर की माँ की चिंता है, इसलिए तो तुमको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर? अरे डॉक्टर पे क्यों? मनप्रीत रेगुलर चेकअप्स। अच्छा हाँ चलो आओ, चलो आराम से। हाँ और मिश्रा साहब कैसे हैं आप? अरे वाह अग्रवाल साहब कितना मोटा हो गया। अरे भाई ये बताइए कि मेरा लड़का कैसा है? अरे आपका बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अरे फिट एंड फाइन क्यों नहीं होगा, शेर का बच्चा है। मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। हाँ। आप अपने घर को पिंक कलर करा लीजिए, पिंक कलर। एक सेकंड, ये पिंक कलर क्यों भाई साहब? कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, समझा करिए। नए मेहमान के आने की खुशी के माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया, क्योंकि पिता को कमरे को गुलाबी रंग में रंगने की आशा ना थी, बल्कि नील रंग में रंगने की चाह थी। और दूसरी तरफ प्रीत, जो पहली बार मां बनने वाली थी, एक नन्ही जान अपने अंदर महसूस कर रही थी
अरे उसने तो अपनी बेटी की फ्रॉक का डिजाइन तक सोच लिया था। बेबी, मैं आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। जो खुशियाँ आपकी मम्मा को नहीं मिल पाई, वो भी। ढाल बन के खड़ी रहूंगी मैं आपके साथ। और आपके पापा, जब वो आएंगे तो हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। मनप्रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? पिंक। हाँ। मतलब हमारे घर एक लड़की होगी। हाँ ठीक है, पिंक सुन लिया मैंने, लेकिन हम इस लड़के को पैदा नहीं कर सकते बस। क्या मतलब पैदा नहीं कर सकते? अरे मेरे माँ बाप को एक लड़का चाहिए था, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाते। ये लड़की क्या करेगी? अरे तो हम अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे तो उसमें हर्जी क्या है? मनप्रीत मेरी बात समझो, हम ये लड़की पैदा नहीं कर सकते। तुमको ये लड़की गिरानी होगी बस। हम ये लड़की नहीं गिराएंगे शिवांग। मनप्रीत मेरी बात पूरी समझ रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता? ये लड़की नहीं गिराएंगे शिवांग। मेरी बात समझो। शिवांग, हम ये लड़की नहीं गिराएंगे। अरे कल को ये इसके आगे 4 लड़के घूमेंगे, इधर उधर मुंह मारेगी, कल को उसका रेप हो गया तो शिवांग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कोई लड़की गिरानी होगी। बुढ़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। बुढ़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। बुढ़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी एक लड़की की गर्भ में ही मार देना। कहते हैं एक माँ के कोख में एक बच्चे की सुरक्षित जगह होती है, पर हम क्यों उस बच्चे की जगह, उस कोख को क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं कि उस जगह को उसके लिए मसान बना देते हैं? हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है चीजें। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत में भ्रूण हत्या के सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए। 1994 प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट के लगने के बाद भी हर साल 10 लाख लड़कियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। चिट्ठी आई है, 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 चिट्ठी आई है। चिट्ठी बांटने का चिट्ठी गया, चिट्ठी बांटी। चलिए चिट्ठी बांटी, चलिए। अरे चड्डा जी घर पे हैं क्या? चिट्ठी आई है आपकी? कान में रुई भर रखी है, अरे जाओ जाके क्या दरवाजा बात खोलो। चल रही है? जब देखो कान में रुई भर रखी है, कान में घी भर रखा है। तुम्हारे घर का सामान कान में रखा है हमने। अरे चिट्ठी वाला, अरे नमस्ते। कैसे बात सब ठीक? कैसा आना हुआ? अरे चिट्ठी कर ये दो ना फिर। अरे ये लीजिए ना, मारे के सुनाओ चलो। अरे पढ़ना लिखना आता तो चिट्ठी थोड़े ही बांट रहे होते। सही बात है, सही बात है। हम बोल लेते कोई नहीं पढ़ी, अंग्रेजी नहीं आती है, चलो कोशिश करते हैं। लेटर है रमेश, रमेश की चिट्ठी आई है। हमारा वो लिटिल ब्रदर है, इतना है, इतना बड़ा। चिट्ठी आई, चिट्ठी पढ़ने दीजिए। रमेश लाइफ इन का तुम्हें खुद नहीं आता। रमेश डैश एक्सपायर्ड। ए बेटा, ए बेटा, बोलो ना। हाँ बेटू, ये एक्सपायर्ड क्या हुए? कब एक्सपायर्ड? लेस के पैकेट में मैंने पढ़ा था गुजर जाना या सड़ जाना होता है। अरे इंसान थोड़े ही चढ़ते, मेरे को लग रहा है सही कूद कर रहे हैं भैया, कूद कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, बेटा उठो, रमेश मर गया।
हमारा दीदी आई क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? अरे पागल लड़की, चिट्ठी बांटने जा रहे हैं। अरे कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? अरे तुम्हारे चाचा जी कौन? अरे कहना क्या चाहते हो? बेटा तुम्हारा रमेश चाचा पल में तोला पल में माशा गुजर गए तेरे चाचा। चिट्ठी दिखाइए। आपके पास क्या पास कैसे पड़ेगी? लाइफ इंश्योरेंस एक्सपायर। अरे पापा, जब आप प्रीमियम को टाइम पे नहीं भरते तो वो एक्सपायर हो जाती है। ये लिखा है इस चिट्ठी में। रमेश चाचा ठीक है? रमेश चाचा को क्या होगा? अभी पिछले हफ्ते तो खाना खा के आए हैं। पापा दूध रमेश चाचा चाचा मूड समझ रहे हैं भैया, बड़े भैया इधर आओ। अरे छोड़ो कमाल कर रहे हैं, पागलों का खानदान है ये। जैसा कि आप सबने भी देखा, एक पढ़ी लिखी बेटी ने अपने जीवित चाचा जी को मरते मरते बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक घर में एक लड़की पढ़ लिख गई तो उसकी सातें पुश्तें पढ़ गई। किसी ने खूब कहा है, बेटों को सिर्फ पैसे बांटते देखा है, और जो दुख बांटती है माँ बाप का वो कहलाती है बेटियां। बेटियां प्यार है, आधार है, भार नहीं। एक एहसास है, एक विश्वास है। उसने भी अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, मांगे वो भी एकदम प्यार है। जीवन जीना उसका अधिकार है और अच्छी शिक्षा उसका हथियार है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ महिलाएं भारत देश की जनसंख्या से लापता पाई गई। बात करें फीमेल लिटरेसी रेट की तो करीब 59% महिलाएं भारत देश में पढ़ लिख सकती हैं, जबकि केरला में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती हैं और राजस्थान में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का कोई दर्जा ही नहीं मिला है। यार प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे? नहीं दे रहा देखो। कहाँ पे थी? रसोई में थी, खाना बना रही थी तेरे लिए। क्या बनाया आज? पालक, आज पालक बनाया। रोज रोज घास फूस खिलाती है। मेरी शराब खत्म हो गई है, पैसे दे मुझे। पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, अपने आप को बेच, कहीं से भी ला, पैसे दे मुझे। मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे शर्म भी है? एक महीने से इस घर में तूने एक फूटी कौड़ी भी नहीं पिला के रखी और तू रोज पी कर आ जाता है। मैं आज भी पीऊंगा, रोज भी कराऊंगा। पैसे दे मुझे। इस घर की अलमारी में कुछ नहीं है, एक फूटा आना भी नहीं है। पैसे दे, पैसे दे। भला कौन औरत ऐसा जीवन जीना चाहेगी? आप, मैं, हम सब ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और फिर अगले दिन वहीं खड़े होते हैं। आज मुझे बेंटों से नहीं तो लाठियों से मारा ही जाना था। यार हर जगह दर्द उठता है। मेरा भी मन करता था कि मैं अपने भाई की साथ नीले वस्त्र पहनकर, नीले कपड़े पहनकर स्कूल जाऊं, पर मेरी लाख जिद के बाद भी मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। कहा गया कि तुम तो लड़की हो ना, पढ़ लिख कर क्या करोगी? अगर तब पढ़ी होती तो आज अपने अधिकारों के बारे में जानती होती। मैं
मैं भी वोट दे पाती। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, 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 मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, दोनों कमाकर ला सकते हैं 2 वक्त की रोटी। मायका अगर बाप का घर तो ससुराल पति का, बना दो उसे इतना काबिल कि बना सके खुद का घर। 22 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्थापना की गई। इस योजना के तहत हर बेटी को बराबर हक एवं पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया और भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार चिल्ड्रन। अरे देखा भाई साहब, देख रहे हैं आप, इतना बड़ा मुद्दा है कि बोल नहीं पा रहे हैं, बोल तक नहीं पा रहे हैं आप, हमको पता है आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है इसके मुंह से। भाई दिल में दर्द होता है 2011 के सीएसआर यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिल्कुल सही, में भारी गिरावट पाई। अरे इधर चाइल्ड सेक्स रेशियो में भारी गिरावट पाई गई। इसमें से 3 मिनिस्ट्रियों का जन्म हुआ। मिनिस्ट्री बताओ 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 मिनिस्ट्री बताओ। हाँ हाँ, पहली है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। देखा भाई साहब, फिर देखिए, भाई साहब फिर डाल गए भाई साहब, हम बोल रहे हैं भाई साहब देखिए 3 मंत्रालयों का जन्म हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही, अब समझ में आ गया लोगों को, बहुत बढ़िया, आइए आइए चलिए आइए। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बदलाव आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं पहले उसे खुद में लाइए। आखिर बेटियां हमसे क्या चाहती हैं? समाज में बराबर की इज्जत, अपने गली अपने मोहल्ले में सुरक्षित महसूस करना, पढ़ना लिखना, और लानत है हम लोगों पर कि हम उन्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आज इस नाटक के जरिए हमने समाज को बदलने की एक छोटी सी कोशिश करी है, लेकिन ये छोटी कोशिश एक बड़े बदलाव में तब बदलेगी जब आप सब हमारा इसमें साथ देंगे। जब हम बदलेंगे तभी ये देश बदलेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप इस नाटक को अपनी जिंदगी समझते हैं या अपनी जिंदगी को एक नाटक तय आपको करना है, आपको करना है। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। और 4 दिन से घंटे और 4 दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे
proceeding with the awards ceremony for the debate competition held in the morning. So we will just be announcing the top 3 students. The third prize goes to Avani Jan in for and Vipul Shah against. And I would like to invite on the stage Ms. Priyanka Singh, the program coordinator, for the vote of thanks. We always have seen people complaining about the administration, how a system should be. But when it comes to build the system, many of us take a step back. We containing our democratic right can build the administration and has always well can strengthen the setup. It is our responsibility to elect an eligible representative for all of us, for our nation. Today's event was conducted with the same motto, to talk about our rights and our responsibility towards electoral system. And it was also possible because of our honorable guest. Firstly, I would like to thank our Dr. Ranbir Singh, IES Chief Electoral Officer, Delhi. Sir, you enlightened all of us by explaining the electoral process in a simple way. I am sure all of us would agree that the event was made more aware and updated about the election and electoral rights. Further, I would like to thank Ms. R. Menaka, IES DM North District, ma'am. The way you explained about the procedure and system was really fruitful and also made us aware about the same topic. Additionally, I would like to thank Shri J.L. Gupta, sir, ITS Nodal Officer, ELC. Sir, you really provide us great knowledge related to election and voting. This was very entertaining session for all of us and really interesting also. And lastly, I would sum up the event by thanking all the dignitaries of TIES and our honorable director, sir, dean, sir, and my fellow event coordinators, my colleagues, and all of us dear students. The event would not have been this success without you all and your support and efforts. Thank you for putting trust in me, and thanks to each of you for making this event success. Thank you so much, sir, and thank you so much, dear students.